Getting Out of the Mess. Anjum Altaf. Published November 20th, 2022. Dawn Editorial. Subscribe now Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए वो ये है कि इस इंतशार से कैसे बाहर निकाला जाए। अब तक कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि मुल्क एक बहुत बड़ी गंदगी में है जो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, और ये अपने हुक्मरानों के मेयार की वजह से बदतर होता जा रहा है। वो अपने मुफादात से मावरा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी वाहिद तशवीश जबकि मुल्क डूब जाता है और जलता है यह है कि सबसे अहम शख्स को मुकर्रर करने के लिए कौन मिलेगा जो इसके बाद शिकायत करेगा। उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है जो करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ है जिसका कोई आसान हल नहीं है, क्योंकि रहनुमाओं का मेयार पहले दिन से ही गिर रहा है। रहनुमाओं के ट्वीट्स और उनके मुमकिना मुतबादिल उनकी दानिशवराना सलाहियत का सबूत है। उनका नुक्ता नज़र बस स्टेशनों पर रिबन काटने या लोगों को वक्त पर जाहिर करने का हुक्म देने या एक ही सफ़े पर होने पर खुश होने से आगे नहीं बढ़ता है जो इस पर लिखा हुआ है। सबसे अहम लोग, चाहे वो कोई भी हों आ रहे हों, इससे मुख्तलिफ नहीं हैं सिवाय इसके कि उन्होंने अपने आप को किसी भी एहतिसाब से ऊपर उठा लिया है और ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके अजीम तजुर्बात ने पे दर पे बहरानों को शदीद तौर पर बढ़ा दिया है। उम्मीद करने और दुआ करने का कोई मतलब नहीं है कि एक निजात दहिंदा चीजों को सीधा करने के लिए आसमान से उतरेगा। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ घोड़ों पर, कुछ कंटेनरों पर। क़ियादत का मेयार मुसलसल गिरता जा रहा है क्योंकि इसने अपने कामों के बारे में किसी भी सवाल को दबाने के लिए जिस तरह की स्कूली तालीम मुसल्लत की है। जिस चीज को वो बचाना चाहते हैं, इसे तबाह करने में उन्होंने एक इफरीत को जन्म दिया है जो बैरून मुल्क फरार होने वालों के अलावा हर एक का गला घूंट देगा। टर्मिनल की कमी के इस मरहले पर सड़ने की हालत और इससे निमटने के लिए सलाहियत की कमी की वजह से मामूल की बहाली का कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ बुनियाद परस्त हल उम्मीद पेश करते हैं। मिसाली तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि झगड़ालू हुक्मरान इस तबाही की संगीनी का एहसास करेंगे जो हर किसी को धमकी देता है और इत्तेफाक राय से जवाब पर पहुंच जाएगा, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है। इसकी गैर मौजूदगी में सिर्फ मकबूल मुतालबा ही उनके हाथ पर जोर दे सकता है और मुल्क को बचा सकता है। टर्मिनल जवाल के इस मरहले पर सिर्फ बुनियाद परस्त हल उम्मीद पेश करते हैं। मैं बुनियाद परस्ती की बढ़ती हुई तरतीब में 3 बुनियाद परस्त हल पेश कर रहा हूँ। उनके फौरी तौर पर गोद लेने की तवक्को के साथ नहीं, बल्कि इस उम्मीद के साथ कि वो एक ऐसी गुफ्तगू को मुतहर्रिक करेंगे जो मुमकिना तौर पर फरार होने का वादा कर सकता है, जो दूसरी सूरत में यकीनी मौत होने का इशारा करता है। इन हलोहे को पेश करने में मैं जानता हूँ कि वो बहुत से गुस्से का सबब बनेंगे, लेकिन इस मौके पर कोई तकलीफ दे रास्ता नहीं। पहली तजवीज़ गैर मरकजियत की है। मौजूदा 38 इंतजामी डिवीजनों को हुकूमत के दूसरे दर्जे के तौर पर ऐलान किया जाना चाहिए। हर एक के अपने मुकन्निना और एग्जेक्टिव्स होंगे। 220 मिलियन की आबादी के साथ पाकिस्तान एक गैर मामूली है जिसमें सिर्फ 4 दूसरे दर्जे के यूनिट्स हैं। इनमें से एक बाकी मुश्तरका के मुकाबले में ज्यादा आबादी है। मलाइशिया 13, ईरान 25, ब्राजील 27, भारत के 36 और फिलिपाइन 76 में मसावी तादाद का मवाजना करें। कम अज कम ये मुल्क के मसाइल को काबिल इंतजाम टुकड़ों में तकसीम करेगा और उम्मीद है कि मकामी रहनुमाओं का कुछ सीट उनको दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सियाक और सबाक और बेहतर तरीके से हल करेगा। इस तंजीम नौ से मौजूदा सूबों की इंतहाई ज़रूरी ज़ैली तकसीम के सदमे से भी बचा जा सकेगा जो हमारे रहनुमाओं की जज्बाती पुख्तगी से बालातर साबित हुआ है। दूसरी तजवीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए जाएं और पाकिस्तान को एक ढेले ढाले कन्फेडरेशन के तौर पर तश्कील दिया जाए। हमें ईमानदारी से यह तस्लीम करना होगा कि मुल्क का साबिका मशरकी हिस्सा बांग्लादेश के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर रहा है, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान एक बार मगरबी बाजू के प्रेटोरियन जुनून से आज़ाद हुआ था और मुअख्खर अल-ज़िक्र को अपनी बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तनाज़ात को जिंदा रखने की ज़रूरत थी।
याद रहे कि मशरकी पाकिस्तान को एक माशी टोकरी केस और एक चिकी का पत्थर करार दिया गया था, जिसके बोझ के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता था। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इक़्तिदार मशरकी पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया जाता तो हतमी अलहदगी का सदमा टल सकता था। बलूचिस्तान को अपने बेपनाह वसाइल और छोटी आबादी के साथ इसी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए कि वो अपने फैसलों में ज़्यादा से ज़्यादा राय रखता है और एक गैर हमदर्द और दुश्मन मरकज़ की तरफ से कम मुसल्लत किया जाता है। सिर्फ ये देखना होगा कि बलूचिस्तान के पानी के इस पार खलीजी रियासतों ने, जिनका कबायली समाजी ढांचा भी इसी तरह का है, पाकिस्तान को किस तरह बहुत पीछे छोड़ दिया। जिस हद तक मुंतकिल शुदा सूबे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बाहमी मुफाद का काम होना चाहिए, न कि जबर का। इससे ये भी इम्तिहान मिलेगा कि आया इस्लाम और उर्दू वाकई कसीर कौमी इतिहाद के लिए गुलू फराहम करते हैं या महज नापसंदीदा लोगों पर गलबा हासिल करने का बहाना है। तीसरी तजवीज़ गवर्नेंस की तंजीम नो है। बादशाहत में वापस जाना अब मुमकिन नहीं है, अगरचे नोट करें कि मलाइशिया में कितनी जहानत से काम लिया गया है और आमिरियत ने बार बार चीज़ों को बहुत ख़राब कर दिया है। अवामी हुक्मरानी का कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन हम यकीनी तौर पर एक ऐसा निज़ाम हासिल कर सकते हैं जहां हुक्मरानी सही मानों में अवाम की तरफ से है। इस तरह के मुतबादिल के लिए एक मॉडल है जिसे एक छंटना कहा जाता है, जिसमें कानून साजों को बालिग शहरियों के बड़े पूल से लॉटरी के जरिया मुंतखब किया जाता है। कदीम एथेंस में सियासी ओहदेदारों की तकर्रुरी का तरीक़ाकार था और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तमाम अहल शहरियों को अवामी ओहदे पर फाइज होने का मसावी मौका मिले, जमहूरियत की बुनियादी खुसूसियत समझा जाता था। गैर सेहतमंद धड़ेबंदी, इलेक्टेबल्स की खरीद व फरोख्त और अवामियत पसंद इना रवैया इस वक्त ख़त्म हो जाता है जब असम्बलियों का इंतखाब लॉटरी के जरिया किया जाता है। इसके बाद ये नुमाइंदे इन माहिरीन को शामिल कर सकते हैं जिनकी उन्हें पॉलिसियां तश्कील देने के लिए ज़रूरत है। इस तजवीज़ को नाकाबिल यकीन और शुकूक और शुबहात के साथ पूरा किया जाना लाजमी है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आज भी आम कानून के निज़ाम में छांटने का इस्तेमाल मुमकिना ज्यूरियों को मुंतखब करने के लिए किया जाता है जो जिंदगी और मौत के फैसलों पर कहते हैं। आज ये पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत की मिसाल है और शहरियों को अपनी हुक्मरानी को अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। इससे बदतर काम करने का कोई तरीका नहीं है कि वो बेपरवाह इलेक्टेबल्स और मजबूत अफराद के मोटली ग्रुप से बदतर काम कर सकें जिन्हें उन्होंने अपनी किस्मत सौंप दी है। स्टेटस को में किसी भी तरह की तौसी पाकिस्तान को मलबे में तब्दील कर देगी। जब तक मौसीकी बंद हो जाएगी, लाइट्स खत्म हो जाएंगी और अगले साल खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। Subscribe now Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. The big question Pakistanis must ask is how to get out of this disarray. By now, no one can deny that the country is in a huge mess, which is getting worse by the day. And it is getting worse because of the quality of its rulers. They are interested in nothing beyond their own interests. Their only concern, while the country drowns and burns, is who will get to appoint the most important man who, they will then complain, does not allow them to do what needs to be done. This is a massive muddle that has no simple resolution because the quality of the leaders has been declining from day one. The tweets of leaders and their potential replacements are testimony to their intellectual caliber. Their vision does not extend beyond cutting ribbons at bus stations or ordering people to show up on time or delighting on being on the same page, quite oblivious to what's written on it. The most important men, whoever they are or have been, are no different except that they have elevated themselves above any accountability and are unwilling to concede that their grand experiments have severely exacerbated successive crises. There is little point hoping and praying that a savior will descend from heaven to straighten things out. Many have come and gone, some on horses, others on containers. The quality of leadership continues to plummet because of the kind of school education it has imposed to suppress any questioning of its doings. In destroying what they aim to save, they have spawned a monster which will end up strangling everyone except for those who will flee abroad. At this stage of terminal decline,
there is no possibility of a normal recovery because of the state of the rot and the capability deficit to address it. Only radical solutions offer hope. Ideally, one would hope that the quarreling rulers would realize the gravity of the catastrophe that threatens everyone and arrive at a consensual response, but that is extremely unlikely. In its absence, only popular demand can force their hand and save the country. At this stage of terminal decline, only radical solutions offer hope. I am proposing 3 radical solutions, in increasing order of radicalness, not with the expectation of their immediate adoption but with the hope that they would energize a discourse that can promise possible escape from what otherwise pretends to be a sure death. In proposing these solutions, I am aware that they will cause many a great deal of angst, but at this point there is no painless way out of the quandary. The first proposal is one of decentralization. The existing 38 administrative divisions should be declared as the second tier of government, each with their own legislatures and executives. Pakistan, with a population of 220 million, is an anomaly having just 4 second-tier units, one of them being more populous than the rest combined. Compare the equivalent number in Malaysia, 13, Iran, 25, Brazil, 27, India, 36, and Philippines, 76. At the very least, this would divide the country's problems into manageable pieces and hopefully some set of local leaders would address them more contextually and better than others. This reorganization would also avoid the trauma of the much-needed subdivision of existing provinces that has proved beyond the emotional maturity of our leaders. The second proposal is devolution of maximum powers to the provinces and restructuring Pakistan as a loose confederation. One has to be honest and admit that the former eastern part of the country has been much better off as Bangladesh than it was as East Pakistan once liberated of the Praetorian obsessions of the western wing and the latter's need to keep various conflicts alive in order to sustain its hegemony. East Pakistan, one should recall, was termed an economic basket case and a millstone without the burden of which Pakistan would race ahead. The reality has been exactly the reverse. Learning from this, one can surmise that had authority been devolved to East Pakistan, the trauma of the ultimate separation could have been averted. Balochistan, with its immense resources and small population, should benefit similarly by having a greater say in its decisions and fewer impositions by an unsympathetic and hostile center. One only has to see how the Gulf kingdoms across the water from Balochistan, with a similar tribal social structure, have left Pakistan very far behind. The extent to which the devolved provinces bind together should be a function of mutual interest and not coercion. This would also provide a test of whether Islam and Urdu really provide the glue for multinational unity or are merely an excuse to exercise hegemony on the unwilling. The third proposal is a reorganization of governance. It is no longer possible to revert back to monarchy, though note how intelligently that has been employed in Malaysia, and dictatorship has time and again made things much worse. There is no alternative to popular rule, but we can certainly have a system where governance is truly by the people. There is a model for such an alternative called sortition, in which legislators are selected by lottery from the larger pool of adult citizens. In ancient Athens, sortition was the method for appointing political officials and was deemed the principal characteristic of democracy by ensuring that all eligible citizens had an equal chance of holding public office. Unhealthy factionalism, the buying and selling of electables, and populist posturing is eliminated when assemblies are chosen by lottery. These representatives can then engage the experts they need for formulating policies. This proposal is bound to be met with incredulity and skepticism. I can only point out that even today, in common law systems, sortition is used to select prospective jurors who have a say over life and death decisions. Today, it is a life and death instance for Pakistan, and citizens need to take their governance in their own hands. There is no way they can do a worse job than the motley bunch of uncaring electables and strongmen to whom they have handed over their destiny. Any extension of the status quo will reduce Pakistan to rubble. By the time the music stops, the lights will be out and there will be nothing to eat next year.
Subscribe now Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.